आज हम लोग शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा टेक जो होगा और हमारे जो प्रश्न होंगे वो बहुत रिलीवेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, इज मैरिज नेसेसरी? क्या शादी करना जरूरी है? यस, You start. Okay, so according to me, I feel that marriage is not a necessity as such. It totally depends on the individual, like what their requirement out of life is, what kind of life they would be willing to live. So no, marriage is not a necessity. and what do you think? I think in our society and in our country, it is very very normal and it is taken for granted that a boy or a girl, once they settle down, means if a girl finishes her studies and then she is supposed to get married, a boy if he lands up in a job or well in certain states, even if they don't have a job, still they get married. So it is necessary for them to get married because all the relatives, neighbors, friends expect that after a certain age, means as soon as you cross 25 years, so now kab shadi hai. May I add to that? I feel like India is a very society-driven country, and by that I mean majority of the decisions in anybody's life, I feel for any individual, does not depend based on their personality, because here people hardly have a personality or say of their own. Majority of the decisions are already laid out by parents, or it is influenced by लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा. Be it marriage, education, income, or even ending a marriage or divorce. Exactly. Nothing is driven by your personal will or choice. It is all dictated by the outside world and how it appears to the world, rather than your individual happiness and needs. Right. I think it should be completely the individual's choice. जैसा whatever she was talking right now, कि सोसाइटी सब कुछ तय करता है, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी क्यों तय करेगा? या मेरी जिंदगी है, मुझे लगता है कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए तो मुझे शादी करनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं शादी के बिना एक नॉर्मल एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ, तो आई डोंट थिंक इट इज एट ऑल नेसेसरी टू गेट मैरिड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर शादी करना ही है तो क्या देयर शुड बी अ प्रॉपर, मतलब देयर शुड बी अ फिक्स्ड एज, और ये इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए कि जब कोई शादी करना चाहे कर सकता है? क्योंकि आजकल थोड़ा लेट मैरिजेस हो रहे हैं। Well, I think time to time age factor has changed, because long ago the girls and boys used to get married in their teens, and then they started getting married in their early 20s. Means in my generation when I was younger, so I think most of us got married by the age of 20-22. And now just because the girls are going for jobs and they are very very focused on their career, they are deciding to marry by the age of 30 or maybe 32. So it depends, but personally I feel that after 40 one should avoid getting married, especially if it is an arranged marriage, because if you have lived a life on your own till 40-45, then you shouldn't fall prey to this arranged marriage thing, because I don't think it can be successful. I'll take a different take on this. We asked if there is any age thing in marriage. I believe this is a very common saying. Nowadays, the children don't know how to adjust. The marriages don't work. In our times, the marriages used to work. There were no divorces or separation. I feel the major reason for this is the age factor. Because when somebody is getting married that young, maybe 20, 22, so majority of your life, that is the life that you see. That is the married life. So that is normal for you. That is what you are used to. Whereas when you are getting married at, let's suppose 30 or 35, major portion of your life, you see what it's like to live on your own terms. You know, you understand what freedom is because you're not that young. So that is why
after that when you get married, you have a strong, clear vision of what you like, what you don't like, what you will tolerate, you won't tolerate. Whereas when somebody is getting when they are married as young as 20, they are quite naive. They don't have a clear picture of what they should be tolerating or not tolerating. Exactly. Very, very true. Yeah. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब शादी फिक्स करना रहता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द अरेंज मैरिज. फर्स्ट तो लेट्स टॉक अबाउट अरेंज मैरिज और लव मैरिज. दो आई थिंक इट इज अ वेरी हेक्टिक टॉपिक, बट स्टिल व्हाट्स योर टेक? We can't just justify saying that this is better, that is not. It depends. So many love marriages fail and so many arranged marriages are perfect. So you really don't know. It's just about the like minds or the adjustment factor or how lucky you have been or how cooperative a partner you have got. Well, what's your take? Well, I might be wrong, but from what I have heard, it is said that most of the arranged marriages usually tend to last longer than love marriages. Now, I don't know why exactly that may be the reason. One of it may be like the least you can know a person and then get into something. So the less chances are you to find out more, wrong about them. Exactly. You Like don't the have any shortcomings. expectations. Exactly. You don't have expectations because you don't know that person. That person has been a stranger to you. Exactly. But in love marriage, you know the person beforehand, so you have your own expectations. Or maybe in arranged marriage, you're already kind of whatever bad happens, you have no way out because it's too late by the time you genuinely get to know that person. Whereas in love marriage, you already have some time to get to know them and then get into the marriage. So you are fed up quite early as compared to arranged marriage. No, actually, another thing is that in arranged marriages, the girls usually they can fall back upon or they can go to their parents and they can hold them responsible if anything goes wrong. कि आप ही लोग तो करवाए थे. You people had got me into this. So, and the parents also behave in a sort of guilt track. They go, yes, we should have been more careful. So, in that way, they get the support of the family. But in a love marriage, if something goes wrong, the parents just rebuke you that we didn't tell you to So go ahead. if you want to spend the rest of your life having an excuse to blame somebody else for your bad marriage, simply opt for Arranged marriage. That is the better choice. लेकिन अगर रिसेंट फिगर आप देखें तो अरेंज मैरिज में भी अच्छा खासा डिवोर्स हो रहा है. डिवोर्स काफी हो रहा है. तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि नहीं लव मैरिज में ही डिवोर्स होता है या वो लोग अलग होते हैं, उसमें वीकनेस होता है, नहीं अरेंज मैरिज में भी बिल्कुल वो सब कुछ हो रहा है. एंड सेकेंड, आजकल अरेंज मैरिज शादी फिक्स करना बहुत बहुत कठिन हो गया है. So don't you think keeping this point of things, it's a better that one should go for the love marriage? Of course, if one falls in love, then only one can go for the love marriage. Yes, I find this complete procedure of fixing a marriage, this arranged marriage thing, very tedious, very boring, and very sort of irritating, annoying. Means you talk to the boy's family, they talk to you, then you are supposed to make 100 calls, then you are supposed to meet them 100 times. So it goes on and on. Means if suppose the boy's parents and the boy comes to see the girl, so they don't come alone. They bring a battalion of people with them, mama, mosi, chacha, all that. And that is not enough. Then again after some time they'll tell that there is one bujurg in the family, so he has to give his consent. Then the first and foremost thing is matching the horoscope. So what about this horoscope matching? Do you think that it is right? मुझे तो लगता है कि हॉरोस्कोप एकदम शेयर नॉनसेंस है. ये मैरिज को कैंसिल करने का एक तरीका आजकल लोगों ने एक्सक्यूज निकाल लिया है लोगों ने कि अगर फैमिली पसंद नहीं आ रहा है या लड़के या लड़की को हम नहीं स्वीकार करना चाह रहे, नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, स्पेशली आई थिंक मेन मुद्दा डाउरी पर ही आ जाता है या इस तरह का कोई मुद्दा आ जाता है. अब डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली दे डू, दे टेल कि नहीं हॉरोस्कोप मैच नहीं कर रहा है. आई थिंक इट इज ऑल शेयर नॉनसेंस. कुछ नहीं होता जाता है.
आप जितने मैरिजेस देख लीजिए हॉरोस्कोप के बेस पे हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ दे आर परफेक्ट एंड दे आर वेरी हैप्पी और दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। एंड ऐसा तो नहीं है कि हॉरोस्कोप मैच करके शादी करने के बाद कोई मिसहैप नहीं हुआ हो। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस व्हेन दे हैव मैच्ड द हॉरोस्कोप्स फ्रॉम बोथ साइड्स and one of the partners means the boy, either the boy or the girl, they have died. So तो क्या फायदा हुआ उतना मैच करके, उतना देख के, उतना परख के। And one more thing I find very strange here, especially the groom's side, the boy's side. Usually I have found that they in arranged marriage they don't want to accept or they don't want to make a girl the bahu if she is more qualified than the boy, or she has gone for a lot of higher studies, she has many degrees, she is in a very good position. So I don't know, they feel koi khatra utra hai ya they feel belittled or something, so they just avoid. They prefer girls who are a little dumb and more or less they should be a simple housewife, or if they have to work and they can go and work in a school so that they can drop and leave the job whenever it pleases them. So that is a very strange thing, at least I feel. And this horoscope thing is sheer nonsense in this sense that I think in most cases they make the fake horoscopes. They make the fake horoscopes, they lessen the age, they change the date of birth. So what's the use then? What's the use of matching horoscope? Instead of that, I think it is better that the medical test should be done to see whether physically both are very healthy and fit, and both the families should interact in such a way that they come to know their likes, dislikes and the way they think. So for that they should just go out once or twice, means the family I am saying, and eat out, and they can see what sort of a mentality they have. अरेंज मैरिज में होता ही है कि अगर ये मेरे अनुसार होना क्या चाहिए, मेरे अनुसार ये होना चाहिए कि गोली मारी हॉरोस्कोप को सबसे पहले जरूरी है कि लड़का लड़की आपस में बात करें। अगर उनको लगता है कि हम लोग दोनों आगे पुल आउट कर सकते हैं, हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उसके बाद हॉरोस्कोप पे फैमिली आ सकता है। लेकिन यहाँ पे तो लोग, अगर आप बोलिए जनरली कि पहले मेरी बेटी आपके बेटे से बात करना चाहती है, तो बहुत ऑफेंडेड फील करते हैं। उनको लगता है बाप रे, जैसे कि बहुत बड़ा तोप चीज बोला जा रहा है, अल्ट्रा मॉड हो गए। नहीं, इसमें मॉडर्निटी क्या है? होना यही चाहिए कि पहले गर्ल्स एंड बॉयज दोनों आपस में बात करें, ठीक लगे तो ओके, आगे फिर पुल आउट करते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ, व्हाट इज योर? I do agree with you. Yeah, whatever you both of you said, I do pretty much agree. फिर अगर हम लोग मैच फिक्स कर ही रहे हैं, तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट शुड बी, क्या हम लोग को ध्यान देना चाहिए, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जैसे मैं एक बोलूं तो जनरली अरेंज मैरिज में बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है अरेंज मैरिज ब्रेक होने का आजकल, कि लड़के की सैलरी सही नहीं बताई जाती है। तो लड़की वाले को ये जानने का पूरा हक है कि लड़का कितना कमाता है और आप उसका पे स्लिप दिखाइए। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है तो फिर लड़का साइड बहुत ऑफेंडेड फील करता है। लेकिन मेरे अनुसार जब अरेंज मैरिज की बुनियाद हो रही है, खड़ी हो रही है, तो सबसे पहले जरूरी है कि सच बोला जाए, दोनों साइड से सच बोला जाए। तो पहला तो ये हुआ कि लड़का साइड बहुत क्लियर कट अपना सैलरी बताए अपने बेटे का क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, what are the other points? Yes, it is very much right. When you have to lead your whole life with a person, so there should not be any fake thing or lies, because देर सवेर तो पता चल ही जाता है. So it is better that in the beginning you are very straight and you just tell the truth. And even if the girl is working, the boy has a right to know how much she earns. And if there is a problem in the family, they should make it clear in the beginning. It shouldn't be that afterwards someone comes and tells something. So it is better that right in the beginning you
make everything clear cut. After that, the other side, if they are willing to go ahead, then it's fine. At least they can't tell you later that you hadn't told me this. नहीं, गर्ल साइड से एक्चुअली क्या झूठ बोलते हैं लोग, उसका एज छुपाते हैं, लड़कियों का एज छुपा देते हैं, फिर उसके क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा झूठ बोला जाता है, वो फेक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, तो बाद में तो पता चल रहा है कि ये फेक सर्टिफिकेट है, उसका एज गलत है। तो इस लेवल पे जब आप बुनियाद शादी खड़ी हो रही है तो मतलब दीज आर द पॉइंट्स ऑन विच द अरेंज मैरिजेस दे आर फॉलोइंग। लेकिन हाँ, अभी एक दो पॉइंट और शायद छूट रहा है। एनीथिंग मोर? One or two things more I have found that people want to stick to their the caste and subcaste. Means in any caste, in our especially in the Hindus, you will find there are subcastes. So maybe for example a person is Brahmin, so there can be different categories. So they are so very finicky about that no, they don't belong to the particular place we belong to, so we are looking for a boy or a girl from that particular place. So I find all this very silly, because if the boy and girl can be compatible, so what difference does it make, Right. whether you are from here or you are from there? Well, I am saying this on a lighter note. As you both said, like there are so many lies said, so many things written. In today's generation, I feel like, no offense, but majority of people who are actually good enough and capable do go out, communicate and find people on their own. There's only those with less of what the other has who have no other option and usually have to go for arranged marriage. So I guess in that case is where all the lies have to come in, because there's nothing, to actually go ahead and brag about the person that you're trying to get married off to in your family. So I guess in that case all the lies come in about the income and stuff. Because if somebody actually earned that much or look like that, they would then go ahead and naturally find someone out there. No, it's not necessary that if you are good looking or in a very good job or everything is perfect, then necessarily you will have a love marriage. Obviously not So, necessary. so many a times you can't fix your own marriage or you can't get the proper guy or girl. So then the parents or the family has to intervene. So they have to get you married. राइट। एंड अरेंज मैरिज में और एक तो झूठ बोला जाता है, अब मे बी लड़की को कोई बीमारी है या लड़के को कोई बीमारी है, इसे भी छुपाया जाता है, और शादी के बाद पता चलता है कि लड़की में ये बीमारी थी या लड़के में ये बीमारी था, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक के रूप में सामने आता है। मतलब इतने प्रॉब्लम्स हैं अरेंज मैरिजेस में। भले हम लोग बात करते हैं कि अरेंज मैरिज कर रहे हैं, लेकिन अरेंज मैरिज इज getting tougher and being more complicated these days, and these are the issues generally one is facing while negotiating and while one is fixing the marriage. चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि अगर अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं तो व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट शुड वी सी, हमें कैसे लड़के या लड़की से शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है ताकि वो मैरिज सफल रहे, आगे बढ़े, ये नहीं कि उसमें कटुता है, पिकनिक्स रहे, गर्ल्स एंड बॉयज अपने फैमिली को कर्ज करते रहें। Since you guys have somehow focused a lot, majority of it on arranged marriage, so in this question I'll somehow take into account love marriages as well. So if you talk about qualities, right, for right, me right. I think for basic qualities, not just in arranged marriage but in love marriage as well, basic qualities should be first of all respect. I feel that is something that is very, very important. And respect is something that you can see in every little thing that the other person does. The way they speak to you, their language. In today's time as well, nobody will disrespect you by using bad words to you. Disrespect many times comes in hidden jokes and silly taunts, which you have to be aware of. And if it does not sit right with you, you should be aware that I cannot further continue with this person. And apart from respect, I feel other things that are important in somebody you're going to live with is something as tiny as their little habits that you find annoying but the other world might not, So these are the tiny things. I feel there's no display of random topics that can fit each and every person.
for you as you are, you need to find out your criteria and whoever fits that list for you. Well, I would like to tell three things. If the person you are going ahead with, you want to go ahead with, ये तीनों ड्रॉबैक्स नहीं होने चाहिए. अगर ये तीनों ड्रॉबैक्स है उस पर्सन में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पीछे हट जाइए. द फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट टेम्पर. द सेकेंड इज सस्पिशियस नेचर. अगर वो गर्ल एंड बॉय बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, सेकेंड वो सस्पिशियस नेचर का संदेह करने वाला है, एंड थर्ड इज ओवर इम्पोजिंग. अपने आप को ये लगातार साबित करने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ जानता है. वो तो बातचीत से पता लग ही जाता है. वो हर चीज में कोशिश शो करेगा कि वो बहुत बड़ा तीसमार खाए, वो बहुत सब कुछ जानता है. वो आपका जीना दुर्भर कर देगा. ये तीन जो डीमेरिट्स हैं, तो ये तीन डीमेरिट्स वाले व्यक्ति से तो आप प्लीज डोंट, आप शादी मत कीजिए. मेरा वेदर इट्स अ लव मैरिज और वेदर इट्स अरेंज मैरिज, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट यू. I would like to add in that whether it is love marriage or arranged marriage, the family and the house that the boy lives in matters a lot. So in love marriage, maybe you are on top of the moon at that time, you don't see the loopholes or the drawbacks and you think that you can adjust. But no, after a certain time all the love flies out of the window and you see the stark reality. So if you find that the boy's family is below you in their upbringing or in their lifestyle or in their income, you should think not once, twice, but at least 100 times. Because it is very, very, very difficult to adjust in such situations. And another very, very important thing is that give a lot of importance to money, income. Right. If the boy doesn't earn much, and he is making promises like I'll do this, I'll do that, in 5 years I'll be here, I'll be there, you just don't go for all that. If he is not doing good financially, then it is better that you drop him. And even in arranged marriages, I have found many parents just see the father of the boy, and in my neighborhood there are many, means the father is in a good government job, he is an income tax officer or a police officer or in a very plum post, and the son is not doing anything, he is good for nothing, but he has everything needed, means he drives a car, he goes to restaurants, he spends money, all that belongs to his dad. And the girls side, they just get their daughter married thinking that they are quite well off, but there somewhere the girl is supposed to be in a big problem, because that dad won't live forever. He will retire, he will die, and then what will this fella do? He will remain good for nothing all his life. And so that marriage will go. So On this question, I noticed something really interesting in both their answers, whatever they said. I realized how broad this topic is. Like, first person took into consideration all the qualities that a person can have, whereas the other one let out all the practicalities of a marriage. So this shows the paradoxical nature that you can marry someone who's in a government job, who has a lot of money, and he can be someone who has anger issues, who has extreme bad nature, wise is not good, whereas you can be with someone who's very loving, caring, nature wise everything perfect, but might not be practically sound based on money or social ways and etiquettes. So that is how this topic is. exactly. सही. और एक दो पॉइंट है, मुझे लगता है that these points are also very important while you are fixing the marriage or when we are going ahead. उसमें एक इशू ये भी है कि अब पता नहीं कितने को सही लगे, लेकिन मुझे लगता है किसी लड़के को अगर शादी करनी है तो आज के डेट पे गर्ल को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. रीजन यू नो व्हाट? क्योंकि आज अकेले आप अपने बलबूते पर बहुत अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हैं. ये गलत धारणा है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो बहुत पैसा कमा रहा है. सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में है तो अंडर टेबल अगर आप बड़ा
उस तरह के करप्ट व्यक्ति हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, अदरवाइज देयर इज अ फिक्स सैलरी. इट डजंट मैटर हाउ हाई पोस्ट यू होल्ड, बट देयर इज अ फिक्स सैलरी इन अ गवर्नमेंट जॉब. सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट गर्ल शुड आल्सो बी सेल्फ डिपेंडेंट. आप एक बार जो दहेज लेते हैं, मतलब कितना नॉनसेंस है. अगर वही गर्ल आपकी लाइफ पार्टनर बन गई जो सेल्फ डिपेंडेंट है, तो पूरी जिंदगी के लिए आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहेगा. तो इंडिया में एक बहुत बड़ी बेवकूफी लोग करते हैं, खासकर इस साइड हम बात नहीं, हर जगह है, लेकिन स्टिल लड़की की खूबसूरती देखी जाती है और लड़के का जॉब देखा जाता है. नहीं, ये बहुत आउटडेटेड चीज है. सिर्फ खूबसूरती काम नहीं आएगी, उसका बिहेवियर एंड प्लस उसका सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है गर्ल का. एंड बॉयज में भी मैं बात कर रहा हूँ कि सिर्फ वो कितना स्टेबल है नहीं, उसका हर चीज, उसकी सोच कैसी है, उसका नेचर कैसा है, वो मेरे स्तर का है कि नहीं, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए और उसके बाद ही शादी करनी चाहिए. क्योंकि जब जिंदगी भर की बात है तो क्यों नहीं थोड़ा सोच समझ कर शादी की जाए. चलो अब नेक्स्ट एक पॉइंट लेते हैं. आजकल हर जगह जितनी भी शादियां हो रही हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और खासकर बहुत लोगों को इनवाइट भी किया जाता है. तामझाम का तो ठिकाना नहीं है, क्या डेकोरेशन है, क्या खाना है, ऑल दैट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन दैट इज इट राइट टू स्पेंड सो मच मनी, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज इट राइट टू इनवाइट so many guests? Well, personally for me, as simple as that, no, I don't think it is right to spend so much money. I feel majority of people who do spend so much of money, it is more of a way to show their capabilities or their income, a way to display like, see, this is what we can do. But I feel the perfect reply to that is all these celebrities who are getting married in a line. There's no one who has a better proof of income than these actors. If Alia Bhatt and Ranveer Kapoor can get married in their house terrace in front of 10 people, then who else can question like you cannot get married in a private setting. So obviously to each its own, but I feel like it's not necessary, it's not required. Well, I think the expense must be curtailed. And there are so many irrelevant, so many things that are associated with marriage, like the girl's parents give her all the furniture, then utensils, then TV, fridge, and washing machine, micro oven. So why? If you are getting her married to a capable person, doesn't he have these things at home? So even to sleep in that house, she needs to carry her own bed, dressing table and all that. So that money should not be wasted. And the other thing that in marriages I find they spend bombs on designer clothes and lehengas and all that. And those lehengas are worn only once or twice, and then they are kept in the corner of a cupboard and forgotten about, because after a few years the bride becomes quite plump and it doesn't fit her at all. So why waste so much money on a thing, on an outfit that you will never wear again? And regarding eating and all, I think that in the party, yes, they should spend money and there should be two different parties. Nowadays in this side of in this side of India, I find that many boys parents, boys side, they just make it a one-time affair. Means the day the girl and boy are getting married, so that day only they have the reception plus the wedding, and they don't invite anyone from their side. क्या बोलेंगे उसको, अलग से invite नहीं किया जाता है reception के लिए. That is very wrong. Means the boy side should also spend money in their own reception. The girl side is spending on the wedding day. And regarding eating, I feel that should be really good, because people won't come to your house every day. So it is a once in a lifetime thing. So you just feed them well. You spend good money on eatables, because I have gone to so many parties, and especially the marriage ones.
they have just called भिड़िया धसान जिसको बोला जाता है कि 1000 आदमी बुला लिए हैं. It is so dirty and the menu is so rabdi, means that puri and sabji and one dahi bada, it is as khatta as anything, and the sweets are equally bad. So you are just saving money on the party, and then you are spending all the money on all that dowry and giving all those useless things. So when you give a party, throw a party where the food is good, for years on end people will take your name. हाँ गए थे वो उनके यहाँ बहुत अच्छा खाए थे. They will hardly remember how the groom looked or how the bride looked or how costly the flowers were or what she was wearing, but they will definitely talk about the platter. Well, मेरा सोचना है कि आजकल मैरिज 5 महीना चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. आप 50 लाख स्पेंड कीजिए चाहे 5 करोड़ स्पेंड कीजिए, वो कितना दिन चलेगा क्वेश्चन मार्क तो यही है. तो कितनी बड़ी बेवकूफी है कि आपने 50 लाख खर्च कर दिया, 1 करोड़ खर्च कर दिया और बाद में वो मैरिज टूट जा रहा है. तो मेरे अनुसार ये सरासर बेवकूफी है इतना पैसा स्पेंड करना. होना क्या चाहिए? अच्छा, इसके पहले कि होना क्या चाहिए, इसमें एक छोटा सा और, कितने गेस्ट को बुलाना चाहिए. तो मैं व्हाटएवर आयुक्ता टोल्ड आई डू अग्री. कोई जरूरी नहीं कि 500 लोग को बुला रहे हैं या 200 लोग को बुला रहे हैं. मेरे अनुसार 100-125 एनफ है. एक्चुअली आप चाहे कितने लोगों को बुला लीजिए, आप चाहे कितनी अच्छी पार्टी दीजिए, 60 से 70% लोग आपको आपकी कभी तारीफ नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ जितना बहुत छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो उसको लेके वो एक बहुत बड़ा इशू खड़ा करते हैं कि पानी बहुत दूर था. मालूम है, जानते हैं कि मिठाई जो था ना एकदम ठीक नहीं था. मतलब एवरीथिंग वाज ग्रेट बट जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग वाज देयर दैट वाज नॉट ऑफ देयर टेस्ट एंड दे मेक इट अ बिग इशू आउट ऑफ दैट. This was a famous joke on the internet that I saw. No matter how lavish a party you throw, there will always be a sulking mama or drunken uncle who will create a scene, who will have a problem with every single thing that you have done. So it does not really matter. Right. तो मेरे बिल्कुल सही बोल रहे हो. आई थिंक मेरे अनुसार 100-125 लोग काफी हैं. चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा लगे बुरा, गांव देहात से पता नहीं कहां से आप अपने ऐसे रिलेटिव को बुला लेते हो. यस, अक्सर भी सी इन पार्टी कितने ज्यादा लोग को बुला लेते हैं और अटर मिसमैनेजमेंट रहता है. तो 2 पॉइंट है. पहला तो कि नहीं, उतना पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहिए. सेकेंड है, उतने ज्यादा गेस्ट को भी नहीं बुलाने चाहिए. इसके पहले कि और आगे मैं बोलूं, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि क्या शादी दिन में होना चाहिए? मतलब रात को क्या होता है कि वी डू अ लॉट ऑफ डेकोरेशन, देन द लाइट इज देयर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. सो क्या रात को पार्टी होनी चाहिए या दोपहर में पार्टी होनी चाहिए? Well, actually, in some communities, they get married in the morning, like the Punjabis or maybe the Tamils, South Indians. They have early morning marriage. So it depends. But in the north side and eastern and western side, we usually have the parties at night, and the marriage takes place at night. Maybe they feel that by the time the marriage rituals start, most of the guests will go. Everything will be quiet, only the family members and relatives, close relatives will be there, and so they can have a peaceful affair. So it depends, because I don't have a problem with the night marriage, but if it suits someone, getting married in the morning is not bad. For me, I feel based on the pictures that you click at a wedding, I mean, for me personally, all I would care about is the pictures, how they come. So based on that, I think a day wedding is the way to go. Whereas as you told, ki people wait ki everybody goes and the marriage will take place peacefully. I find majority of the wedding pictures, like on the mandap, both the bride and groom look so tortured, and I feel like they'll doze off, and because of the whole lot of rituals that have been going on for days. Right. And plus they are hungry and they are not Exactly. supposed to eat. Because of which they look extremely tired at night. आई थिंक नॉर्थ इंडिया में भी एक बहुत मेजर चेंज आने की जरूरत हो सकता है. डिसएग्री करें, लेकिन मुझे लगता है रात की पार्टी नहीं,
दोपहर की पार्टी होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि मे बी 11 बजे से शादी शुरू हो, 1, 1:30, 2 बजे तक वो शादी समाप्त हो जाए, 2 बजे तक हम लोग सबको डिनर दे सके, डिनर नहीं लंच, सॉरी लंच करवा सके, और फिर रात को बॉय साइड वाले अगर वो रिसेप्शन देना चाहें तो वो दे। इसलिए कि रात को शादी करने में एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत हाई है एंड बहुत से प्रॉब्लम्स। एक तो डेकोरेशन में कई लाख का खर्चा आता है, सेकेंड आप रात को खा नहीं पाते हैं, भले उतना तामझाम रहता है लेकिन रात को आप ठीक से खा नहीं पाते। दोपहर में जो लंच रहेगा उसमें सब कोई बहुत आराम से ठीक से खाएगा, और इतने ही गेस्ट को बुलाइए ना कि एक बड़ा सा ओपन जगह है, सब कोई बैठ के बहुत आराम से बहुत मस्त होके खाए, अच्छा लगेगा। तो पैसा भी बच रहा है आपका, सभी कोई बहुत आराम से खा रहे हैं, कोई लूट मार नहीं है, फोटोज बहुत अच्छे आएंगे, गर्ल्स बॉयज भी बहुत इंजॉय करेंगे, मतलब वो ठीक लगेंगे। तो मुझे लगता है कि अब एक चेंज आने की जरूरत है दोपहर में। मैं तो प्रीफर करूंगा। नेक्स्ट है कि क्या मैरिज इतने लॉन्ग अफेयर होने चाहिए? जनरली व्हाट हैपेंस कि टेक्स अबाउट से थैंकफुली दैट इट इज नॉट टेकिंग 1 week long now, it is going for 2 or 3 days, 3 days generally I feel. But do you think that it should be a little, I mean I should take a little less days now? Actually nowadays it is based on so many different things, that is why the marriage goes on for 3 or 4 days. Ki you'll have mehendi, you'll have sangeet and all that, and people have fun, the friends expect, and so because of that I think it is a long drawn process. Otherwise the marriage affair should be just a 1 day affair. I also think that a marriage should be of 1 day affair. Of course the fun and all those things like, तो मे भी हो सकता है 2 दिन अफेयर हो कि एक दिन हम लोग whatever you were talking about the महिला संगीत and all that, दोस्त लोग के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, चलता है, वो होना होए तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन like आर्य समाज आई एम टॉकिंग अबाउट, आर्य समाज जनरली टेक्स अबाउट से 2 hours and 2.5 hours, वो लोग सारे रिचुअल करते हैं, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से होता है और डे में ही होता है साधारण तौर पे, तो क्यों नहीं उस तरह की शादी की जाए। ओके, एंड लास्ट नॉट, 1-2 क्वेश्चन और बच गया है कि डावरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि चाहे कुछ भी बोल लिया जाए, नॉर्थ बिहार में इससे डावरी अभी भी बहुत ज्यादा है एंड एक्सपेक्ट करते हैं लोग, डायरेक्टली बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन शादी फिक्स होने में डावरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड सबसे ताज्जुब की बात है कि इस समय लड़के बड़ा आज्ञाकारी बन जाते हैं, ऐसे आज्ञाकारी नहीं रहते, लेकिन जब पैसा फ्री में पैसा लूटने की बात आती है तो माँ बाप को सपोर्ट करने लगते हैं कि अब हम कैसे आवाज रेज करें, अब पापा ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं। Few days ago, I saw a reel where people go around asking questions. So a guy around of our generation was asked, "Do you support dowry?" So he said, "No, I'm completely against dowry. There should be no such thing." But अगर कोई बाप, प्यारा सा बाप अपनी बेटी को अपने शौक से AC देना चाह रहा है, तो अपने घर में सुख से रहे, अच्छे से रहे, उससे मेरा तो फायदा है नहीं, उसी का है वही AC में बैठेगी, तब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। So I feel this is the current scenario of dowry, that everybody will say no, we are completely against dowry, but then they go ahead and they gift someone AC, fridge, mirror, bed, and all these things according to me is the new dowry. If you have to give gifts, so many things to someone, that is dowry. Instead of money, you're just gifting them cards and so many material things. Actually you know what, बैकडोर से वो पैसा भी लेते हैं, ये तो लेते ही है, बैकडोर से वो पैसा भी लेते हैं। मेरा तो कहना है कि अगर एक लड़का अपने बलबूते पर एक गर्ल को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता तो लड़का ही नहीं, वो पुरुष ही नहीं है। And in this I would like to add that I hold the girls, the bride's parents responsible for this dowry system in our country, because once they put their foot down and firmly say no, 1, 2, 3 and gradually it will increase and become 100, then only the boys will think twice before asking for dowry. But here the girls' parents, even I know in my known circle, I can't take the names, they have given dowry,
but they always claim, always say, no, the boy side didn't demand anything. Whatever I'm giving out of my own sweet will. I wanted to give. That is why I'm giving this micro oven and fridge and sofa set and all that. They didn't have a demand. So what for are you shielding them? Right. And a few years ago, I was with my daughter in a restaurant having lunch, and I think at Next the table. next table, they were discussing, means they were fixing, negotiating a marriage. Already everything had been fixed, but at the last moment, the boy was demanding a certain amount because he had to go abroad, maybe Australia or somewhere for something. And he was so shameless. I clearly heard him saying that, uncle, it is not greed, it is need. Because I will be marrying your daughter, so you should spend the money. Because I'll go there for 2 or 3 months for a training and then I'll earn more. So your daughter will be in a good position after that. So it is not greed, it is need. And the man was very hyper and he said, look, beta, I have already said yes to everything, all the demands I have fulfilled. And even he was fulfilling the demand of dowry, cash. And now all of a sudden you are asking for more money. So I was so very exasperated, I was so angry, I was really in a mood to leave my table and go and bash his head. But I don't know what happened further, and I prayed to God that that man will have the guts to call off the wedding. डावरी बिल्कुल 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 गलत है, और कोई भी फैमिली डावरी ले रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ा फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल मैं लड़की साइड को मानूंगा. अगर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है तो किस लिए आप डावरी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं. एंड सेकेंड, जो लड़का हामी भर रहा है डावरी के लिए, वो तो बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत बहुत छोटी मानसिकता वाला है. वो आपका दामाद बनने लायक ही नहीं है. डोंट मैरी योर डॉटर टू सच पर्सन्स. यही जो लोभ है, ये जो डावरी डेथ वगैरह होता है, ऐसे ही लोग करते हैं. तो देखने में कितने भी पॉलिश एंड सोफिस्टिकेटेड लगे, लेकिन अगर वो लोग डावरी मांग रहे हैं, प्लीज उनके चक्कर में मत पड़िए. दुनिया बहुत बड़ी है. देयर विल बी समवन जो कि आपको मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा. That brings out the things we are discussing are such serious things. That brings out so many layers of wrongs of this society. That people would rather give money to somebody, like just marry my daughter, take this much money, than be okay with not getting their daughter married and just letting her be. Like for them, it's worse for their daughter to be single than get them married off to any random person who's okay with taking money. Right. And they give it the name of Stridhan. Yeah. It is all sheer nonsense. What's Stridhan? Like imagine going to a house where everything is of your money and then them being the Harvey one on you. Like if And they're I'm the treating one, you like a maid. I should be the one saying everything in this house belongs to me because of the money spent by my parents. Instead, ironically, the scenario is the opposite. एंड इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऐसी लड़कियों की भी कमी नहीं है जो खुद डावरी सपोर्ट करती हैं, अपने पेरेंट्स को फोर्स करती हैं कि आप डावरी दीजिए, आपको ये सब चीज देना होगा. ऐसी घटिया सोच मानसिकता रखने वाली लड़कियों पे तो लानत है. ये नहीं कि अपने आपको आत्मनिर्भर बनाए, इतना स्ट्रांग बनाए कि डावरी एंड ऑल दैट. व्हाई द हेल आई एम गोइंग टू गिव यू द डावरी? आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई एम स्मार्ट एनफ, I can lead the life on my own terms. So I really don't think at all, अगर कोई भी लड़की ऐसा करती है, I'm never going to support that girl. Okay, and the last question is, what about intercaste and inter-community marriage? Intercaste, inter-community marriage, ये भी एक बड़ा इश्यू है. इंटर रिलीजन तो ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन अगर चाहिए तो यू कैन कॉमेंट ऑन इंटर रिलीजन. चलिए एक बार बहुत क्लियर कर दे. इंटर रिलीजन मतलब हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, लाइक दैट. इंटर कम्युनिटी हुआ कि हिंदू ही है लेकिन बंगाली बिहारी से शादी कर रहे हैं, बंगाली पंजाबी से शादी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह.
और इंटर कास्ट हो गया कि सेम कास्ट में है, सेम कास्ट में, सेम कम्युनिटी, हाँ सेम कम्युनिटी है लेकिन कास्ट अलग हो जा रहा है। अगर ठीक है चलो, हाँ व्हाट्स योर टेक? I mean, it would be very, I don't know, typical to preach that love is all that matters. But the reality of it is that love is not all that matters. There are a lot of other things that come into the scene, including caste, religion, community. And not anyone being superior or inferior, it's not about that. It's about the basic difference that it brings along between two individuals. Because in the starting, all there is love, you both love each other. But as years go by, there is a particular culture that you are brought up in. Your language has certain, things that the other person cannot catch, cannot understand. And as time goes by, the feeling of alienation, isolation will overpower both of you because you feel like the other person does not understand where I come from. They cannot get into the culture that I am in. And I mean, this is the negative side, There are also people who do, marry each other's cultures as well. They try to indulge into the culture of each other as spouses. So I guess it comes down to the individuals. Well, I totally agree with her. Because in intercommunity marriages, whether you accept or not, there are many issues and many problems that you face. Language, eating habits, then rituals, then reading habits, everything changes. And when your relatives come from both sides, means the language becomes a big issue and everything else. So it creates a lot of rift. Well, I do agree with both of them, but there is a one or two point that I would like to mention here. अगर दोनों वर्किंग है और दोनों बाहर रहते हैं तो मे बी ये उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वंस इन अ व्हाइल यू आर कमिंग डाउन टू योर नेटिव प्लेस और व्हेन यू आर मीटिंग योर रिलेटिव्स मे बी 1 वीक और समथिंग तो चलता है। 1 वीक के लिए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन मे बी आप बोथ ऑफ यू आर लिविंग इन अ बैंगलोर, ठीक है, आप इंटर कम्युनिटी, आपने शादी किया है, बोथ ऑफ यू आर वर्किंग, और चूंकि आप बाहर रह चुके हैं तो आपका ईटिंग हैबिट्स और मोरलेस सेम ही हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बंगाली हैं तो आप अलग चीज खाइएगा, क्योंकि जब आप शहर के बाहर रह रहे हैं तो वहां जो मिलता है आप वही खाइएगा। हाँ मे बी वंस इन अ वाइल, मे बी हर वीक या मे बी 10 और 15 डेज में आप जाते हैं किसी अच्छे रेस्तरां में और बैठ के आप अपनी मनचाही चीज खाते हैं, तो शादी के बाद भी खा सकते हैं आप। तो अगर आप बड़े शहर में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट है बोथ ऑफ यू, तो चलता है, तब इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी चलेगा। आई थिंक मेरे अनुसार से तो कोई उतना ऑड नहीं है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आकर हम अपना सेशन ओवर करना चाहते हैं। हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस रेज किए और अपने विचारों को रखा। हो सकता है कुछ विचार से आप सहमत ना भी हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं ये सोचने वाले प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड? No, perfectly. Yeah, I think we have covered most of the things. हाँ. As you can see, both of them are very much, bhavuk about this topic as well. So that's all. नॉट एग्जैक्टली भावुक, लेकिन हाँ बहुत से चीज अंदर थे। Even if 1 or 2 persons just realize and they admit that, oh yes, these changes should come and I'll be the person to bring the change, then we will really be very happy. Thank you.